Hello students, today I'm going to discuss with you binary search, which is a searching technique in data structure. Let's see how it works. What is binary search? We have to understand first what is binary search. Binary search is basically a technique which works efficiently on sorted lists. आपको ये याद रखना है कि whenever you are implementing binary search, ये सिर्फ sorted list पे ही अप्लाई होगा। तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने से पहले you have to sort your list first. If it is unsorted list, you have to implement some sorting algorithm to sort your list first. Only then you can apply binary search. Binary search actually follows divide and conquer approach. After getting a sorted list, what you have to do is you have to implement binary search following divide and conquer approach, in which lists will be divided into two halves. List दो parts में divide हो जाएगी, and the item is compared with the middle element of the list. दो parts में कैसे divide होगी? We'll find some middle element of the list and the item to be searched will be compared with middle element of the list. अगर वो match हो गया, if the match is found, then the location of middle element is returned. Okay. Otherwise, you have to find out that your element was bigger or maybe larger than the middle element or smaller than the middle element. Depending on that, you have to choose the particular half of the list in which you're going to search your element later if you're not matched with the middle element. Okay? So this is the procedure you have to follow while working on binary search. Let's take an example of binary search. Suppose we want to search an element and the element which is given is 23. This is 23 and the list given is 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91. You can see that list has been sorted because we need binary search to be implemented only on sorted lists. What you have to do is you have to find out the low and the high. Okay. Low is 0 because the array, in every array, the subscript starts with 0. And high is 9 in this case because we have 10 elements. Okay. So low is 0 and high is 9. What you will do, you'll add low to high, that means 0 plus 9, and you'll divide it by 2. Okay. So the number you'll get will be the integer value only. Okay. We'll work on an integer. So 9 divided by 2 will be 4. So 4 will be the middle element. This way we are calculating the middle element. हम middle element calculate कर रहे हैं. And 4 will be the middle element, and we are going to compare fourth position element, that is 16. So 16 is the middle element, fourth is the middle position. So 23 will be compared with 16. So if you're comparing 23 with 16, the match is not found. It's not matched, right? So what you have to do after this is आपको ये find out करना है कि अब 16 के equal तो नहीं है आपका element, क्या 16 से छोटा है या 16 से बड़ा है? You have to find it out. If it is bigger than 16, means larger than 16, you'll choose the second half of the list, means right hand side list, half list, to search further. Otherwise, if your element is smaller than 16, then you will choose the
left half of the list for further searching. Okay, so in this case 23 is larger than or greater than 16. So your left list will be discarded and we'll move on with the right list. So if you're coming to the right list, definitely low value will be changed because we have discarded the left list. हमने left list discard कर दी है, तो low value कितनी हो जाएगी 5 because middle position क्या थी, low position हो जाएगी 5 because middle position 4 थी, तो middle plus 1 will be the low position. High position will be same क्योंकि हम right hand side से list choose कर रहे हैं जिसमें high already mentioned है. Fine, your list will be from low 5 to high 9. So again we'll calculate the middle position. Middle position calculate करने के लिए we'll add 5 plus 9. 5 is a low position, 9 is a high position. 5 plus 9 divided by 2. So 5 plus 9 will be 14. 14 divided by 2 will be 7. So middle position now will be 7 in this case. And a 7 in this case, and the value at the 7th position is 56. You can see here the value at 7th position is 56. You will compare 23 with 56. It's not matched again. What you will do now, your list is again divided into two parts, the elements after the middle position and elements before the middle position. So you have to compare it. 23 is smaller than 56, so we'll choose the left list next time and we'll discard the right list. Okay, हमने left list choose कर ली है. आपका low 5 था but high क्योंकि हमने right list discard कर दी है, so high will be 6 at this time, the ending position of left side. So 6. So our low is 5, high is 6. We'll again calculate the middle position, which will be 5 plus 6 divided by 2. That means 11 by 2. And the position of middle element will be 5 integer value. So at middle element we'll get 23, and if we match with the element to be searched, it's same. So your search is complete now. You found the value 23 at this position, this location, which is fifth subscript location. Location is 6 and subscript is 5. So you can show it using your code. This is how the binary search works. Let's see how we can write algorithm for binary search, then where that can later be converted to code. Okay, so binary search algorithm के लिए what we need is an array which is mentioned by A here. Okay, एक array चाहिए हमें, A से represent किया है. Lower bound जो lower position है array की definitely 0 होती है. Upper bound the higher position, अगर 10 एलिमेंट है तो 0 to 9 में 9 होगी. वैल्यू इज द वैल्यू टू बी सर्च्ड, जो हमें एलिमेंट सर्च करना है. ओके, देन व्हाट वी नीड टू डू, these are the variables required. Okay, the first step we need to do is initialize. हमें initialize करना है. क्या करना है, बिगिनिंग पोजिशन को और एंड पोजिशन को. बिगिनिंग को हम लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करेंगे which will be 0 in the last example case, and end को हम upper bound से represent करेंगे. अगर हम पिछले वाला example लें तो ये upper bound होगा 9. पोजिशन को हम -1 से represent कर रहे हैं. अब लेटर ऑन जब पोजीशन की वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज एरे 0 से शुरू होता है, तो -1 से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि जब चेंज होगी तो कोई लोकेशन हम उसमें स्टोर कर सकें. तो दिस इज इनिशियलाइजेशन प्रोसेस. देन स्टेप नंबर 2 में हमें लूप अप्लाई करना है एंड रिपीट करना है स्टेप नंबर 3 एंड 4 को. कब तक रिपीट करना है, वाइल बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड. जब तक बिगिनिंग लेसर और इक्वल्स टू एंड है तब तक आपको लूप अप्लाई करना है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लूप आपका फिनिश हो जाएगा.
जैसे स्टेप नंबर 3 में हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो बिगिनिंग प्लस एंड को ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड करके you'll get that. ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल में कैलकुलेट की. Step number 4 में after calculating the mid value, what you have to do is A array की mid position पर, we are calculating the mid position में, A array की mid position पर जो भी value है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू टू बी सर्च से, VAX. If it is match, if it is equal, then पोजीशन को चेंज कर देंगे और पोजीशन को मिड के इक्वल कर देंगे कि मिड पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल गया. हम पोजीशन प्रिंट कराएंगे और स्टेप नंबर 6 पे चले जाएंगे. स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट. दैट मीन्स हमारा टास्क हो गया है और हम अपना ये लूप जो है वो फिनिश कर सकते हैं. हमारा टास्क कंप्लीट हो गया. वी कैन कम आउट ऑफ द लूप. बट अगर ऐसा नहीं हुआ, द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज नॉट fulfilled in step number 4, what we'll do, else if अगर A array की मिड पोजीशन की वैल्यू क्या ग्रेटर तो नहीं है वैल्यू VAL से. मिड पोजीशन की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो वैल्यू टू बी सर्च स्मॉलर होगी. तो इस केस में क्या करेंगे, हम एंड पोजीशन अमेंड कर देंगे और हम लेफ्ट साइड चूज कर लेंगे फॉर फर्दर सर्चिंग, लेफ्ट लिस्ट चूज कर लेंगे फॉर फर्दर सर्चिंग और मिड आपकी जो एंड पोजीशन है उसे अपडेट कर देंगे विच विल बी मिड -1. ओके, आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, बिगनिंग पोजीशन है, वो 0 ही रहेगी इन दिस केस. अगर ऐसा भी नहीं होता है, दैट मीन्स ए एरे की मिड पोजीशन जो है वो स्मॉलर है VAL से. दैट मीन्स वैल्यू ग्रेटर है. तो वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि आपको बिगिनिंग को अमेंड करना पड़ेगा. आपको राइट हैंड साइड वाली लिस्ट को चूज करना पड़ेगा. बिगिनिंग विल बी अमेंडेड एज मिड +1. आपकी जो एंड है वो सेम रहेगा. इफ इट गोज 9 तो वो 9 ही रहेगा. आपकी बिगिनिंग अमेंड हो जाएगी इस केस में. ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक कि आपकी बिगिनिंग की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एंड है. ओके, यहाँ हमारा एंड ऑफ इफ कंडीशन है, इफ का एंड है और ये इफ स्ट्रक्चर का एंड एंड ऑफ लूप है. इसके बाद स्टेप नंबर 5, इफ पोजीशन इज -1. अगर हमें पोजीशन किसी एरे की नहीं मिलती है और पोजीशन की वैल्यू सेम एज -1 है जो हमने इनिशियलाइज की थी, in this setting, first step, you have to print that value is not present in the array. अगर पोजीशन अपडेट नहीं हुई, that means आपकी एलिमेंट जो है वो एरे में है ही नहीं. और ये if हमारा यहाँ एंड हो जाएगा. then you have to exit from the code. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको एरे में एलिमेंट मिले ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको स्टेप नंबर 5 इम्प्लीमेंट करना होगा. बिकॉज स्टेप नंबर 3 एंड 4 जो है वो 3 में तो आप मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बट 4 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा बिकॉज आपको एलिमेंट मिला ही नहीं है. आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी विल नॉट गेट रिजल्ट. सो यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 5. Now let's discuss about the time complexity of this algorithm. First, you have to understand that what is time complexity. Time complexity is the time consumption of an algorithm. How much time an algorithm takes to complete its task. So every algorithm has 3 cases whenever we are calculating the time complexity: worst case, average case, and best case. Best case is that in which you found the element at one go. एक ही बार में आपको एलिमेंट मिल गया. तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज O1. फर्स्ट अटेम्प्ट मिल जाएगा. एवरेज केस और वर्स्ट केस. एवरेज केस वो केस जिसमें आपको एलिमेंट काफ़ी सर्चिंग के बाद मिल रहा है. The time complexity of binary search in this case is O log n. If we talk about worst case time complexity, then worst case means the your algorithm
is completely followed and it takes the maximum time, या तो एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में मिलता है या फिर एलिमेंट नहीं मिलता है, ऐसी सिचुएशन को हम वर्स्ट केस कहते हैं. तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज O log n. ओके, तो एवरेज केस वर्स्ट केस सेम है, बेस्ट केस इज O1. To remember this, complexity is very important for any algorithm. Thank you so much. That's all for binary search.